a sweet reminder before watching. If you haven't watched or done any of the modules like previous 1, 2, 3, 4, it's a quite gentle reminder that please just stop this video and watch that video first, because all the modules are in continuation and it would just break the flow as well as reduce your interest to continue this further. And if you are a returning viewer, a very warm welcome to you. As we all know that we have covered 4 modules. Yes, it's a bit interesting and surprising. Now we have come back to our module number 5. What does this say? By addition and by subtraction. As we can see, the rule or the title of the module, it's quite obvious that addition and subtraction will go hand in hand. As we can see in our first example, इन दिस 38 प्लस 9, अगर हम इसमें देखें तो 9 प्लस 1 करूँगी तो 10 होगा. फर्स्ट वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि इसमें 1 का ही रूल होगा. यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट 2, 3 और एनी अदर फॉलोइंग नंबर. सो इसमें 38 प्लस 9 में 9 इज़ क्लोज टू 10. सेम रूल चल रहा है. येस, आई टोल्ड यू इट्स ऑल इन कॉन्टिन्यूएशन. कुछ ना कुछ चीज़ रिलेट है ही एक दूसरे से. नाउ 9 प्लस 1 विल गिव मी 10. ओके, तो मैंने +1 इधर किया एंड एज अ रूल सजेस्ट बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन. इधर ऐड किया है तो ऑन दी अदर हैंड आई हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. तो -1 उधर किया तो व्हाट डज दिस गिव मी? 37 + 10. येस, very nice. Now coming to our second example, 39 + 18. 39 is close to 40. So what did I did? 40 + 17. Similarly with this 38 + 59 में, as we know 59 क्लोज है 60 के, तो हम क्या करेंगे? yes, +1, तो ये क्या बन जाएगा इनडायरेक्टली? 60 + 37 विच गिव अस 97. कितना सिंपल हो गया. अगर हम डायरेक्टली करेंगे 38 + 59, वी हैव टू काउंट ऑन आवर फिंगर्स. या हमें मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, बट इसमें it just need a small part of a mind to solve this. That's what a technique say, brain and train to frame. Yes, last but not the least, it's a quite interesting trick, so I would like to you to frame any 5 problems, 5 equations and do addition to it. Okay,